So I knew that I won't be able to do this job, sales job. So what I suggested is, so what I did is I went for an internship, pure equity research internship. Okay. But before that, in my college days or maybe after graduating my BCom, I was I did a financial modeling course. So at that time, it was very rare. You don't find you will not find such classes who used to teach financial modeling, etc., etc. At that time. So still, I did it. It was an expensive course at that time. I remember I had spent almost 35,000 that time. Back in 2013, 10 years back. Now they are charging even more, 40, 45,000, 50,000 at some classes. If you go to Wall Street, they charge you 50,000, and they give you they tell that they give you what your placement, but getting into equity research is not about having just you make a model and go into research. There's a lot more to it. That's a lot more for financial modeling, above up and above financial modeling. So being an analyst from last 7 years taught me many things, that how financial modeling plays a big part into equity research and why it is an important skill. Again, I'm saying making a model is not that easy. Only punching numbers, only analyzing, taking growth rate, you know, taking historical growth rate and projecting for the future, doing all those things doesn't help, because every one of you today who are attending the lecture, if I teach you, every one of you will know that what is up and above that you do up from this modeling. So this course is designed to tell you this thing, that after making a model, how to progress. So there are equity research reports writing, industry analysis, then comparable companies. Now I have seen students on LinkedIn or maybe freshers on LinkedIn posting financial model and saying I have made a model. One day they make a model of Tata Motors. One day they make a model of Reliance Industries. This big companies, even we as an analyst don't try to predict that, because this is such a complex business. It's not about just numbers. You should know that where are these numbers coming from. When you get a balance sheet, now what is being taught in colleges is that they give you a balance sheet, they give you an annual report and tell you to make a model. Okay. And already numbers are filled, you just want to forecast and make a DCF and then value it. Now, DCF, first of all, doesn't work in India. DCF is an MNC concept which doesn't work in India. Discounted cash flows. I hope many of you must be knowing this word. Discounted cash flow. Now, this has not been taught in or not been used in India. This has been used in developed markets where the companies or the industry is quite developed. Like if you say a US market or maybe a European market. Now, I started my career as an equity research analyst in Aryan Capital. So it was a sell-side broking house, which was institutional side, on the institutional part, where I used to interact with the fund managers of this different funds, HDFC, ICICI, um, then banking funds. Okay, there are many types of funds. So I used to work there as a sell-side analyst. Working 2 years there, I then shifted to be an analyst. I got a promotion. So there I was covering specifically only one sector, which was pharmaceutical sector. Before that in Aryan, okay, I was covering auto, IT and pharmaceutical. But then it was much specific role that I just went and was covering only pharmaceutical sectors in India. After 2 years, 3 years of working in INSEC, I jumped out into CRISIL. So CRISIL was a buy-side role uh, where I was working with HSBC Global Fund. So I was tracking not only the Indian markets now, but the whole global markets, whether it be US, whether it be Euro, whether it be China, whether it be Indonesia, the big markets you name, and we were covering it. So that gave me a good exposure about financial modeling. All those concepts, DCF and all, are worked or have been taught or have been used in the developed markets. So right now I'm working for an investment bank which is based out in Belgium. So I now cover only Belgium pharma stocks. So I work as a freelancer over there. I'm not a full-time employee. Eventually, while going through this journey, many people on LinkedIn used to connect to me
and so ask me, sir, how do you go about making research? How do try? How do you make reports? How to get into equity research role, etc., etc. I'm a CA, I'm a CFA, I'm a MBA, but I'm not getting into equity. They all want experience. Now, equity research, as I said again, it is not something that is taught in the colleges or any bachelor degree. It is what you should be more inclined towards learning about stock market, not stock market, but about the company in which you are investing or the sector which that you are investing. So yeah, I had that, in the early days in my college, I used to invest, I have lost money, lost a lot of money trading the stocks, etc. But then that I wanted to know that, or I want to get into this field because I wanted the one to tell that where should I invest the money, or I should be the one to tell investors that this is the stock you should buy. That what made me more focused towards going into equity research, and eventually that struggle paid off. I started off doing an internship, and then I got into Orient Capital. So I forgot to tell. First, I left my sales job. I was earning, I think, after a BCom degree, you earn almost 25,000. So I was earning 25,000, and then I left and did a 2,000 rupees internship. 2,000 also, I was the traveling cost was more than 2,000 because it was 40 kilometers far from my place. So just went there and did this internship, and then the deal striked out, and I went through this process. Now I am an analyst also. I work for MBA colleges. If you guys are from Mumbai, Wellinkar College is quite famous in Mumbai. So I teach as a valuation professor in Wellinkar College. So there I teach financial modeling and business valuations to students. I am also a CFA coach. So I have been teaching students from last 3 years. So this all of my journey been through. So what are we learning over here is today is about, again, I said financial modeling. But before that, let's interact a bit now, since I'm only talking from so long. You can just chat, since it will not be possible for everyone to unmute. How many of you know about financial modeling, or how many of you have done modeling? I can just raise their hands here. If they have made a specific model, you can also write in the chat box. Chat box is open. Going from Wall Street, okay. Not yet done. Fine. Okay. Not done. Okay. Okay. Okay, fine. So do you know, guys, why do you make this model? Those who have done, why do you make the model? Just talk about practical thing now. Why do you make model? And why have you made? Okay, there are who doesn't know financial modeling. Okay, fine. Situation of the company. Okay, financial projections, forecast. Fine. Know the value of the company. Yeah. Okay. So Kushbo is a little bit close to know the value of the company. It is not about forecasting. After forecasting, what do you do? After forecasting is, yeah, you find the value of the company. So basically, financial model is made to find the value of the company. Value of the company means what? See, if you know that some stocks trade on the markets, so whatever the price is now, how will you determine is that the best price to buy or not? So that is why we made a model. We make some future estimations that in the future, if company does this kind of sales or this kind of profit, what will be its current price, or what price the stock can move, what is the maximum that it can achieve given the forecasting or given the skills that you have. Yeah. So modeling is made specifically to value a company, not for any other reason, to forecast and all. What do you do after forecast? This forecast is, see, modeling is nothing
but punching numbers in Excel to find the value of a company in future years, depending on your estimations. So when you talk about finding the value, all things come: forecasting, uh, analyzing company, etc., etc., etc. Okay, all those you can say it sums up to valuation of a company. Okay. Now models are made in many ways. DCF, the discounted cash flow, is told to be one of the most precise one used. MNCs usually now in Crisil, it was an MNC, so Crisil do use DCF. They do ask you DCF in your interviews as well. Indian companies don't ask. There's another method called market multiple approach, where you have to look at other companies' relative valuation. That is called relative valuation, where you have to look at other companies to value your company. Now, in this course, in the next 12 sessions, or maybe 6 hours, 6 sessions, what are we learning is making a model. Now, let me show you one of the model which I made as an analyst. Okay. So if you see this, this is a model of Hero MotoCorp. Hero MotoCorp. You know this company, Hero two-wheelers company in India, which says bikes. Okay. Now I have made a model. Okay. Now let me ask you one simple question. I hope guys and girls, in your college days, you must be driving bikes, and girls maybe they use scooters. Even boys usually use this. Now tell me, which bike do you like? Just have a random poll. Which bike do you like, or which bike do you have currently? If you want to buy a bike, which bike will you buy? Now tell me, don't tell me Harley Davidson and all those things. Okay. So something that you can own or something you can afford. And the name of the bike. Okay, the name of the bike, not the company. You all are maybe in your 20s, so okay, Royal Enfield, Yamaha, Pulse, Activa 5G, okay, Avengers, Interceptor, Activa, fine. Okay, Splendor. So guys who have written as Splendor, may I know why Splendor? Suraj, okay, Suraj, why Splendor? Can you unmute yourself if possible? Yeah. Sir, mileage अच्छी देती है. What is your age, Suraj? 25. 25. Okay. Okay. Value. Okay. Mileage. Now that depends. You know, a Splendor you cannot take it to your college. Maybe a youngster. You know who buy bikes. Usually the one young population. If you see the buying age of bikes are usually 18 to 25. Right, guys? Those who are in college or just passed out, will you take a Splendor to a college? To your college? Yes. Yes, sir. Sir, अगर बजट में वही रहेगी तो जरूर ले जाएं. ठीक है, तुमको जरूरत नहीं होगी, चलो तुमको एक बाइक लेनी है, जरूरत के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं. चलो अभी बाइक कैसा होता है, 18 साल में कोई जरूरत के लिए नहीं लेता. Right, guys? No one buys it for your own traveling. Usually, it's to impress someone, at least in the age of 18 to 25. 25, after 25, obviously, if you want to go to office and all, that depends. But when you go to college, it is not your, that you don't want bike to go to college. You just want to flaunt it around. Now, if you see over here, when I asked this question, hardly few people have answered, Splendor and HF Deluxe. Rather than that, everyone is Activa, FZ, Royal Enfield, Yamaha, Royal Enfield, I have heard Apache, okay, Suzuki. Now you will find very people who are not interested in owning a hero bike. Now, if you go to a metro city, is nice. I am from Mumbai. If I ask my friends and colleagues, maybe 5 years back, no one wants to buy a hero bike. Now, why? Any answer?
अर्बन सेक्टर लेती है सर वो अपने अंदर, सॉरी, लाइक विलेज सेक्टर को ज्यादा फोकस करता है सर हीरो। हाँ, it focuses only on the rural sector, बराबर, it focuses on the rural sector, but what about the urban? मुझे अर्बन से सेक्टर से जितना सेल्स आता है उतना रूरल से नहीं आता। लेकिन सर तो नो, पल्सर हो लाइक्स पल्सर। सर हीरो का रूरल से ज्यादा आता है सेल। हाँ, तो वही मुझे पसंद है। रूलर से ज्यादा आता है, बट बताता हूँ मैं तुमको क्या है वो आगे। रूलर से ज्यादा आता है, तुम बता ना, तुम जहाँ पे रहते हो अभी, रूलर भी काफी रूलर सिटीज है ना, रूलर सिटीज में बदल रहे हैं। काफी सिटीज है, काफी रूलर इज नाउ ना, रूलर वाले अभी कोई गरीब नहीं रहे। रॉयल एनफील्ड के सेल्स भी रूलर से आते हैं, तुमको पता है ये चीज? रॉयल एनफील्ड ज्यादा अर्बन में है सर, रॉयल एनफील्ड का ज्यादा अर्बन में होगा। नहीं, रॉयल एनफील्ड का ज्यादा रूलर से आता है। सर कंफर्म है ये, मतलब ऑफिशियली ये हमें मैनेजमेंट से बात करके पता चला है कि उनका मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स इज फ्रॉम रूरल। हमको पहले लगा था ये अर्बन प्रोडक्ट है, बट ऐसा नहीं है। मतलब रूरल कैसा होता है, रूरल भी डिफाइंड होता है। अभी रूरल मतलब एकदम ही गांव नहीं जहाँ पे लाइट वेट कुछ नहीं हो। अभी इफ यू सी, रूरल इज ऑल्सो डेवलप्ड। रूलर्स भी है ना, उनके पास भी महिंद्रा की बोलेरो होती है और स्कॉर्पियो होती है। फार्मर्स, देयर आर रिच फार्मर्स एंड देयर आर पुअर फार्मर्स। राइट, सो रिच फार्मर्स जो होते हैं वो भी रूलर में ही काउंट होते हैं। राइट। तो जो हीरो का जो शेयर था रूलर का, वो रूलर भी डिवाइड हुआ है, हाई इनकम रूलर और लो इनकम रूलर में। Right. About the rural part, sir. So like, I live in Kolkata. I'm from Gujarat, so I live in Kolkata. मैं जहाँ पे रहता हूँ, like there, like if you just go 5 kilometers away from my house, which is like very much core to Kolkata, we have metro access and everything. Like 5 minutes walk, my house is like at a 5 minutes distance from the metro. So there also like 5 to 6 kilometers away, there is a branch of Bandhan Bank. I wanted to go and check there due to some work. वहां पे भी दैट इज द रूरल ब्रांच। तो उस एरिया में डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है, एंड इट इज एन एक्सपेंडिंग सिटी। वहां पे फ्लाईओवर्स है, लाइक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स आर बीइंग बिल्ड, बट उसको रूरल बोला जा रहा है। सो लाइक उसका भी तो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिल रहा है ना हम लोगों को। रूरल का कैसा था, हमने जो स्कूल में पढ़ा है, रूरल का डेफिनेशन मतलब गांव बोलते हैं, गांव रूरल। अभी वो रहा नहीं है, वो चेंज हो गया है। रूरल मतलब अभी कोई गांव नहीं रहा है। रूरल के भी डिफाइंड होते हैं, कौन से रूरल मतलब लो इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप। अभी तुम पंजाब में जाओ, पंजाब तो पूरा रूरल ही है। पंजाब रूरल सिटी है, जाके देखो उनका रहन सहन देखो जरा, पंजाबियों का गरीब नहीं होते वो लोग गरीब। हरियाणा और पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पे भी होता है शायद रूरल और अर्बन। पॉपुलेशन के बेस पे नहीं होता है, इनकम के बेस पे होता है, कहाँ से इनकम आती है। तो अभी रूरल, अभी तुम जैसे देखते हो हीरो का, जब बोल रहे हो कि रूरल से आता है, ये मिसकंसेप्शन था लोगों का कि रूरल से आता है, रूरल वाले गरीब है इसके लिए सस्ती चीजें लेते हैं। तुमको तो नैनो कार जब आई थी इंडिया में, पता है क्यों बंद हो गई? किसी को पता है क्यों बंद हुई नैनो कार? सर मार्केटिंग ठीक नहीं थी उसका, मतलब टाटा की मार्केटिंग तो ठीक थी नहीं सर, वो उस गाड़ी को आग लग गया था कहाँ पे। नहीं सर, मैं मतलब चीप प्रोडक्ट बोला है। नहीं सर, बात क्या था ना, जैसे टाटा मोटर्स में एक सेकंड, हर्ष बात कर रहा था, एक सेकंड हर्ष को बात कर। प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट ठीक नहीं था उन लोगों का। हाँ सर, टाटा मोटर्स ने जो मतलब नैनो निकाली थी ना, वो बेसिकली मतलब एक नॉर्मल जो एक होता है ना, मतलब अपर मिडिल क्लास या मतलब हायर क्लास जो कि गाड़ी अफोर्ड करते हैं एसयूवी टाइप, मतलब उनके लिए नहीं था। ये बेसिकली उन लोगों के लिए था जो कि एक बाइक पे 4 लोग जाते हैं, मतलब एक फैमिली जाती है, जो कि काफी अनसेफ हुआ करता था। तो मतलब रतन टाटा जी मतलब टाटा मोटर्स ने ये गाड़ी उन लोगों के लिए निकाली थी जो कि एक बाइक अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए मतलब इसका प्राइस 1 लाख 1.5 लाख के करीबन था। पर यहाँ क्या हो गया ना कि आदमी ने मतलब जो अब स्कॉर्पियो चला रहे हैं या फिर कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जो मतलब एक अच्छी गाड़ी अफोर्ड कर रहे हैं, तो वो ना डिफेम करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये चीपेस्ट कार है, मतलब ऐसा है, ये वो ऐसा है। तो मतलब बेसिकली गाड़ी उन लोगों के लिए थी ही नहीं कभी। बराबर, गाड़ी तो तो ये मतलब निकाली थी। हाँ, मैं सचिन बात कर रहा हूँ सर। उसको कहाँ पे भी एक कार को आग लग गया था। लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया, टाटा कार्स मतलब सेफ नहीं है। ऐसा नहीं होता है, ऑडी को भी आग लग गया था। ऑडी थोड़ी है वो, ऑडी ऐसा नहीं था, ये मुंबई में जली थी। कहीं पे इंडिया में कार को एक सोशल स्टेटस माना जाता है, तो लोग क्या कहते हैं कि
की वजह से सब कुछ मतलब चीप लगने लगा कि वो सोशल रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगी, इसलिए लोगों ने उसको डिनाई। राइट यही हुआ है कि लोग टाटा ने रतन टाटा ने तो निकाला था इसके लिए कि एक आम आदमी भी अफोर्ड कर सके कार, बट वो इतनी चीप थी कि लोगों को वो स्टेटस सिंबल से मतलब था। अभी जब तुम ये बोलते हो हीरो का बाइक्स है, तो हीरो के बाइक सिर्फ वो लोग चलाते हैं जिनको सच में जरूरत हो जाने की, जिनके सच में पैसा नहीं है। ऐसा रहा नहीं है इंडिया में अभी, वो जमाना खत्म हो गया है कि सस्ती बाइक है तो अच्छी है। अभी तुम्हारा लेट्स से तुम अगर बड़े होके तुम्हारा बच्चे को तुम हीरो नहीं दोगे, अगर यही उनका मॉडल रहा तो लोगों को, हमको भी पल्सर, जब मैं कॉलेज में था मुझे पल्सर ही चाहिए थी, भले मैं अफोर्ड कर सकूं या नहीं कर सकूं। मैं मेरे डैडी को ये बोलने का मुझे पल्सर चाहिए वरना मुझे बाइक ही नहीं चाहिए। मेरा कॉलेज था 5 किलोमीटर दूर और मैं वहां बस से भी जा सकता था, मुझे स्प्लेंडर लेके जाना नहीं था कॉलेज में। ठीक है, अभी वो होता है वो चीज टाइम का, ठीक है, ग्लैमर लगता है ना, तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं, तुमको दिखाना होता है किसी को कि हमारी बाइक है, तुम्हारे दोस्तों के साथ दिखाना होता है। तो ऐसे में हीरो ये किधर भी फिट नहीं होता है अभी भी। जैसे लोगों का इनकम बढ़ रहा है, जैसे जैसे नैनो जैसी गाड़ी चीप लगती है, 2 लाख की गाड़ी चीप लगने लगी लोगों की, तभी समझता है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है। और इससे तुम अगर सस्ती चीजें दोगे लोगों को तो वो सस्ती के लिए भी लोग मना करते कि ये सस्ता है तो मुझे गाड़ी चाहिए नहीं। तो जैसे ये हीरो, ये जब मैं मॉडल बनाया था, मैं और मेरा कलीग था, मेरा सीनियर था, उसको मैंने बोला कि हीरो की बाइक मुझे कोई फुकट में दो फिर भी मैं ना खरीदूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को उसके प्रोडक्ट्स पता थे। भाई मैं तुमको उसके प्रोडक्ट्स के सेल्स बताता हूँ कि सेल्स नंबर क्या है। तुम बोलते हो रूलर में यूज होता है, ये होता है, अब ये मेरे सेल्स नंबर्स है, हर एक मॉडल का सेल्स नंबर है। ठीक है, और ये मुझे मिला है पब्लिक सोर्स से। अभी मुझे नहीं पता तुम कितने लोग जानते हो कि ये कहाँ पे मिलता है। पब्लिक गूगल से मिला है मुझे ये सब डेटा, काफी टाइम से है। 22 अप्रैल 19 से मेरे पास हर महीने का डेटा है, हर महीना ऑटो कंपनीज, ऐसे मेरे हर कंपनी के, हर ऑटो कंपनी के डेटा है मेरे पास, मारुति का भी है, हीरो का भी है, मतलब हर ऑटो कंपनी का। नहीं, एनुअल रिपोर्ट में ये डेटा नहीं मिलता सचन। तो ठीक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे हमारे कोर्स में कि हम कहाँ से लेते हैं डेटा, क्वार्टरली में भी नहीं मिलता, कंपनी नहीं देती है, कि तुमको गूगल से ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ, तुम्हारा एक प्रोडक्ट था HF डीलक्स, अभी किसी ने, मैंने सुना है HF डीलक्स, उन्होंने बहुत बोला है HF डीलक्स और स्प्लेंडर। देखो ये 19 में कितने बेचने की, ये 2 लाख आसपास, 2 लाख के आसपास है, 1,80,000, 2,20,000। अभी सिर्फ देखो इसका ट्रेंड क्या है। अभी ये देखो, ये कोविड नहीं है यहाँ पे, कोविड तो 2020 में आया था, 2019 है। देखो इसके सेल्स क्या हो रहे हैं, मई जून जुलाई, ठीक है, यहाँ पे तो बारिश होती है, फिर भी 2,22,000 कभी था, ये घटते जा रहा है। इधर हुआ था, अभी इधर दिवाली होती है, ठीक है, वो एक आध महीना छोड़ दो, धनतेरस में खरीदते हैं, नवरात्रि होती है तो ठीक है। बट देखो तो भी 2,22,000 ही था, इसके ऊपर कभी गया? 2,23,000 था इधर तो। अभी तुम देखो 2,23,000 से अभी देखो मार्च में तो 1,80,000 आ गया। ठीक है, ये कोविड था सर, 2,43,000 ओके अक्टूबर। ये कब हुआ था पता है? जब कोविड जस्ट पिकअप हो गया था, पेंट अप डिमांड था ये, दिस वाज द पेंट अप डिमांड। ठीक है, राइट, तो ये तो एनालिसिस में आना ही नहीं चाहिए तुम्हारे कि अचानक से सेल्स बढ़ गया था। राइट। इसके नंबर्स कभी वापस मैच ही नहीं हुए। सर मार्च में हुए, मार्च 2021 में, मार्च 21 में, 2,30,000 मार्च में हुए 2,30,000, ठीक है। और उसके बाद में जून में भी, उसके बाद भी अगर तुम देखो यहाँ पे 21 में वापस वो कोविड का रेट आया था, जून जुलाई में, तो ये सब कोविड के। बट तुम देखोगे इसके ओवरऑल सेल्स गिरते ही जा रहे हैं। ठीक है, ये तो मैंने एस्टिमेशन से, मेरे ओवरऑल सेल्स यहाँ पे गिरते ही जा रहे हैं इसके सेल्स। अभी क्यों? देखो हम जब प्रोजेक्ट क्या करते हैं, एनालिसिस, अपने किसी ने मॉडल बनाया हुआ, क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं ना, एक्सपेक्ट 5%, 2%, 3%, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हुआ है क्या ग्रोथ? तो डी ग्रोथ हुआ है। अभी क्यों? देखो 2 लाख तुम 2019 में बेचने के, 2022 आ गया, फिर भी 2 लाख के ऊपर तुम्हारा जा ही नहीं रहा है सेल्स। ग्रोथ होना चाहिए ना, कंपनी ग्रो होने को क्या चाहिए? ग्रोथ होना चाहिए। सर इसमें एक डेटा शेयर करूं? हेलो, हाँ, तो पूरा आप देखो टू व्हीलर इंडस्ट्री है ना, 2019 या 18 में जो सेल किया था उसके ऊपर नहीं गई है,
पूरी इंडस्ट्री नहीं गई है। अब देखोगे तो टीवीएस का स्टॉक देखा हमने। हाँ, टीवीएस पता है, टीवीएस ग्रो कर रहा है, वो मार्केट शेयर गेन कर रहा है। हाँ तो क्यों कर रहे हो? वो मार्केट शेयर गेन कर रहा है, देखो, ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो नहीं हुई है, तो वही हो रहा है ना, तो मार्केट हीरो का शेयर मार्केट शेयर उसने लिया है। तो अगर मैं आज हीरो लूं, हीरो अच्छी कंपनी है बुरी कंपनी है? सर अच्छी है, रिलायबल है। रिलायबल है, तो क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ इसमें? हाँ, इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैं? Looking at numbers, no. लुकिंग एट नो नंबर्स, सर। ये नंबर्स तो मैंने ठीक है बाद में डाले हैं। मैं तो 2017 से इस पे नेगेटिव था, क्योंकि इसके पास एक भी ऐसी बाइक नहीं थी जो कस्टमर्स को अच्छी लगे। अभी ये जो सेल्स हो रहे हैं ना, ये सब तुम्हारे वो रूरल सेल्स है, जो कभी कभार आते हैं कभी कभार नहीं आते हैं। राइट सर। ये वही सेल्स है जो हमेशा पब्लिक जो होता है ना, जो गांव वाले होते हैं वो लेते हैं, या फिर उनको चाहिए होता है कम्यूट करने को। यहाँ पे कोई नया कैंडिडेट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि आजकल के जनरेशन को हीरो की बाइक चाहिए ही नहीं। 2 साल में नेगेटिव ग्रोथ है, ग्रोथ तो छोड़ो, नेगेटिव ग्रोथ है। और ये उसकी टॉप सेलिंग मॉडल है। दूसरी थी उसकी डीएक्स, और कितने की आती है हीरो? 30,000, 30,000, 40,000, चलो 50,000, 50,000 भी नहीं आती। अराउंड 1 लाख, 80 80 90,000 कर रही है सर। नहीं, अभी तो 80,000 94,000 के लगभग है। 50 के आसपास ही आती है स्प्लेंडर तो। नहीं 90,000। सर, अभी 75,000 के आसपास अच्छा है। ओके, अभी अभी मेरे पापा रिसेंटली का बढ़ा होगा। मेरे सर, पापा on का road इसका ही आते आते एजेंसी, इसकी 90,000 हीरो पड़ की जाती है एजेंसी Splendor रूरल की। एरिया में। अभी रिसेंटली बढ़ा होगा। तो अभी उसका एक प्रोडक्ट आता है माइस्ट्रो भी करके था। अभी तो उन्होंने क्या हुआ, इनका सेल्स ग्रो नहीं आया, तो माइस्ट्रो करके एक प्रोडक्ट था, नहीं चलता है। माइस्ट्रो में। उसने पता है किसको लिया था? रणवीर कपूर को ऐड में लिया था। अभी रणवीर कपूर उसके टाइम में उसका रॉक स्टार मूवी आया था, वो काफी फेमस हो गया था वो टाइम पे। इसके लिए उसको अभी रणवीर कपूर लेता होगा 1-2 करोड़ आराम से, उसके एडवर्टाइजिंग का 1-2 करोड़ रणवीर कपूर को दिया। जिस दिन वो एड में आया ना, उसी दिन मैंने हीरो के सब स्टॉक बेच दिए। पहली बात, माइस्ट्रो कंपीट कर रहा था एक्टिवा को। जाके बाइक देखो, किसी के पास भी तुमको ये बाइक मिलेगा नहीं। माइस्ट्रो बहुत हार्डली लोग लेते, तुम्हारे आसपास दोस्तों को पूछो, नहीं लेते। सर, और सेकंड हैंड भी कोई लेता नहीं है। सेकंड हैंड तो छोड़, सेकंड हैंड मार्केट तो है ही नहीं टू व्हीलर्स का, बहुत कम है। तो ऐसे सब कंपनी को अगर मैं एनालिसिस करने बैठूं, मैं मॉडल भी बना लूं, डीसीए भी बना लूं, उसका क्या मतलब है? अभी ये गलती होती है एक फ्रेशर में और एक एनालिस्ट में। तुमको मैं कंपनी दिया, तुम रैंडमली कोई भी कंपनी उठा लेते हो और मॉडल बना लेते हो। मॉडल बनाना बड़ी बात नहीं है, वो थोड़े टाइम में तुम सीख जाओगे। हमारे सेशन के बाद तुम मॉडल बनाना सीख जाओगे। बट किस पे बनाया मॉडल, क्यों बनाया, क्या रीजन है, उसके प्रोडक्ट क्या है? अभी मैंने देखा है स्टूडेंट रिलायंस पे मॉडल बनाता है। रिलायंस करता क्या है, ये 99 लोगों को पता नहीं है, 99% को लगा नहीं कि रिलायंस करता क्या है। उसका सिर्फ ऑयल का बिजनेस नहीं है, बहुत कुछ है उसमें। टीसीएस, किसको पता है टीसीएस क्या करता है, कैसे रेवेन्यू बनाता है? टीसीएस है तो कंपनी बहुत बड़ा। टीसीएस सब बोलते हैं, टीसीएस टीसीएस टीसीएस, इन्फोसिस, ये आईटी वाले करते क्या है? ऐसा कैसे आता है? किसी को नहीं पता, हमको भी नहीं पता है कैसे आता है। तो ऐसा अगर तुम ऐसा एनालिसिस करोगे एज अ फ्रेशर, ऐसे सब चीजों पे, सॉफ्टवेयर नहीं बना था टीसीएस, सॉफ्टवेयर एक पार्ट होता है उसके रेवेन्यू का। तो ऐसे सब चीजें जब होते हैं, तुम मॉडल बनाते हो तुम बिना नंबर्स के, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है नंबर्स मिलते कहाँ है। ऑटो के तो कम से कम मिल जाते हैं, बाकी इंडस्ट्री के तो मिलते भी नहीं है। मतलब जो मिलते हैं वो तुमको छोड़ के पूरी दुनिया भर का तुमको रिसर्च करना है। क्यों? हीरो बकवास कंपनी है, मारुति बकवास, ऑटो सेक्टर चलता नहीं है, जरूरी नहीं है। तुमको जो कंपनी अच्छी लगती है, तुमने जो प्रोडक्ट्स उसका यूज किया है, वो कंपनी उसमें तुम इन्वेस्ट करो, या उसका तुम मॉडल बनाओ। ये कोई नहीं सोचता, सब अपना चालू होता। अभी मैंने जैसे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, ऐसा तुम कभी खुद से इंटरैक्ट नहीं करते। अभी ये गलती होती है तुमको जॉब नहीं मिलने के कारण, या फिर तुम ग्रो नहीं हो रहे, तुमको पता नहीं होता है कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तुमको बस कंपनी अच्छी दिखती है, इबिटा अच्छा है, उसका मार्जिन अच्छे, ये अच्छे वो अच्छे। हमको जो भी कॉमर्स वाले हैं उनको सिखाया होता है रेशियोज कैलकुलेट करना, रेशियोज अच्छा, आरओई अच्छा मतलब कंपनी अच्छा, आरओई खराब मतलब कंपनी खराब। तो ऐसा नहीं होता है। आजकल वैल्यूएशन जो कंपनी लॉस करते हैं उनका भी वैल्यूएशन प्रॉफिट कंपनी वालों से ज्यादा होता है। क्यों? क्या रीजन है? टेस्ला, तुमको पता है इलॉन मस्क रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। टेस्ला का कभी प्रॉफिट एंड लॉस देखो, लॉस है, उसने 2020 तक उसने लॉसेस की है। फिर भी कैसे बन गया वो? उसका प्रोडक्ट देखो, यूएस में जाके हर एक आदमी के पास टेस्ला है, इलेक्ट्रिक गाड़ी
यूएस में टेस्ला के अलावा और बहुत कम बिकती है। BMW, मर्सिडीज तो बाद में है, और वो भी लग्जरी सेगमेंट में है। प्राइमरी सेगमेंट में जहाँ पे लोग अफोर्ड कर सके वो सेगमेंट में टेस्ला को कंपटीशन ही नहीं है। अभी आ रहे हैं, अभी चाइना से कंपटीशन आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये सब कंपनी का तुमको सेल्स फोकास्टिंग ही बहुत बड़ी चीज है। तुम अगर ये सेल्स फोकस नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा मॉडल पूरा का पूरा जीरो है। अभी देखो ये जो मॉडल है मैंने कैसे लिंक किया है, तुमको सिर्फ बताता हूँ कि लिंकेजेस कैसे वर्क होते हैं। अभी ये DCF है, ठीक है, मैंने किया है DCF से इसका वैल्यू आया है 2280, ठीक है। अभी ये करना पड़ता है, तुम यूज करो, रिपोर्ट में लिखो या ना लिखो, बट ये करना पड़ता है। अभी मेरे को बताओ कि मैं ये फोकास्टिंग मैंने किया है, तो यहाँ से मैंने फोकस किया है, यहाँ से ब्लू लिख रहे हो, तो कौन सा प्रोडक्ट का ज्यादा सेल्स होना चाहिए जब मेरा प्राइस बढ़ेगा, कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा। अगर तुम्हारा हीरो कंपनी है, कौन सा मॉडल तुमको ज्यादा बेचना चाहिए, तुम बताओ। जहाँ पे ज्यादा मार्जिन है, यहाँ पे ज्यादा मार्जिन है, ठीक है, ये पहली बात हुई। अभी हीरो के इसमें बताओ कि तुमको तुम्हारा मेजरली सेल्स कहाँ से आता होगा, मतलब रेवेन्यू, कि तुम्हारा इतने प्रोडक्ट्स है उसके। प्लेजर सर, प्लेजर, HF डिलक्स और शायद ये स्प्लेंडर से। इधर पैशन स्प्लेंडर, HF डिलक्स और ये सुपर स्प्लेंडर, ये हाँ। दो ही है इसके बड़े। अगर Right. इसका ग्रोथ होता है 10%, 20%, कुछ फर्क होगा क्या कंपनी पर? नहीं, 10-20% से नहीं होगा। 10-20% नहीं होगा, बराबर। इसको ग्रो होना होगा, राइट, बड़े अमाउंट से ग्रो होना होगा। राइट, मेजरली इसका 10% मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई। यस, 5000 का 10% मतलब 500 यूनिट हो गया, इसका 10% मतलब 1000 यूनिट हो गया, इसका 10% मतलब 20,000, 2000 यूनिट हो गया। तो ग्रोथ इसमें आनी चाहिए। तो अभी मैंने, बाकी तुम किसमें भी ग्रोथ लाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारे इसको। तुम अगर ये दो सेगमेंट में ग्रो नहीं होते हो तो मतलब ही नहीं है। या फिर तुम क्या है, तुम थोड़े प्रीमियम सेगमेंट में आ जाओ। अभी हीरो वैसे ही ये सेगमेंट तो ग्रो कर नहीं पा रहा था, जैसा हमने देखा नंबर्स में। उन्होंने ट्राई किया इसमें ग्रो हो जाए प्रीमियम मार्केट में, क्योंकि ये पता है पल्सर 400cc भी आती है, हीरो के पास 200cc की भी बाइक नहीं थी। जब भी इंडस्ट्री 400cc पे जा रहा है, पल्सर 200, 220, 180 ना, अपाची 180, 200, 220, 300 भी आया अपाची। हीरो के पास एक भी बाइक नहीं थी जो 200cc में थी। हमको लगता है रूरल वालों के पास पैसा नहीं है, वैसा मैं बोलूं कि वैसा वो चीज नहीं है, रूरल वालों के पास भी पैसा होता है। अगर वो बुलेट अफोर्ड कर सकते हो, समझो उनके पास कितना पैसा है। तो अभी उन्होंने ये सेगमेंट में आने को चालू किया। अगर हमने गया था, मैं एक एनालिस्ट मीट को गया था इनके साथ, हीरो का MD आया था हमको बताने को कि हमने ये बाइक लिया, तुम एनालिस्ट लोग इस पे रिपोर्ट बना। हमने जाके बाइक का टेस्ट ड्राइव लिया, इतना बकवास बाइक था वो, इतना बकवास था, मतलब कंपेयर टू पल्सर और तुम्हारे अपाची के सामने, कि मेरे को कोई गिफ्ट भी देना फिर भी मैं ना लूं वो बाइक। इतना इतना उसका बकवास मॉडल था, दिखने में उसका लुक्स काफी ज्यादा खराब थे। देखो तुम कंपेयर करो एक्सपल्स 200 एक्सट्रीम कंपेयर टू, ये तो आने की भी पहले की बात है, मैं ये इधर की बात कर रहा हूँ, 2017-18 की बात कर रहा हूँ, हाँ सॉरी 19 की बात कर रहा हूँ, तभी आया था वो मॉडल। पहले सेल्स किया, फिर देखो इधर तो उसने एक बाइक भी बेच नहीं पाया हो 200cc का। अभी ये पूरे इंडिया का फिगर्स है, 100 करोड़ के पॉपुलेशन में एक बाइक नहीं बेच पा रहा है वो। 3-4 हजार किए, फिर गया 2000 देखो, फिर तो कोविड के बाद तो चला ही गया, उसका चाम ही चला गया, हार्डली कुछ बाइक बेच रहा है वो। और ये बाइक को मार्केटिंग करने के लिए उसने विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और जब विराट कोहली इंडिया का टेस्ट कैप्टन और इंडिया का ODI कैप्टन दोनों बन चुका था, मार्केटिंग की जरूरत थी। बाइक नहीं आया तो मार्केटिंग की जरूरत होती है, बराबर। पर क्या विराट कोहली को हायर करना सेंसिबल था? तुम बताओ। बिल्कुल तुम्हारा नहीं कंपनी है, तुम्हारा प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, तो कल विराट कोहली करे या टॉम क्रूज करे या एंजेलिना जोली तुम्हारा प्रोडक्ट प्रमोट करे, कुछ होने वाला है मतलब? नहीं। तो फिर क्या मतलब है मुझे ये मॉडल बना के, कुछ है मतलब मॉडल बनाने का? कुछ है क्या मतलब, आप बताओ। Sir, हाँ sir, I have a question, sir. हाँ बोलिए। So the question is, sir, preparing model
and taking the decisions are two different aspects. Is it possible I'll prepare the model and leave the decision taking on the management? No, but so then why? See, you have to invest, na? So you make model for yourself, not for the management. No, I'm just talking about as a work, like in a work culture. Is it possible? Like I prepare the model, I take the decision. Is the way, or is it possible also I'll prepare the model, then management take the decision based on my model? See, now if I make a model like this on a hero company, my Okay. senior will throw this model out. बोले कंपनी Okay. परफॉर्म नहीं कर रहा है, मॉडल का मैं करूँ क्या? How will you live it? Why you make a model when you like a company? तभी तो मॉडल बनाते हो. ऐसा randomly उठ के मॉडल नहीं बनाते कोई भी. When you like the company, when you invest, when you like to invest, तब मॉडल बनाते हैं. Fine. So मॉडलिंग बनाते वक्त ये सब चीजें माइंड में रख के मॉडल बनाना होता है. अभी मॉडल कैसे बनता है, क्या मतलब? अभी ये एक मॉडल ना मेरे स्टूडेंट ने ही बनाया है. देखोगे इसने कितना कितना सारा उसने इसमें एनालिसिस किया है. अभी ये सब नंबर उसने डाले, तुम्हें पता है कहाँ से मिलता है. उसने पूरी मेहनत करके मॉडल बनाया. ये सिर्फ मेरे एस्टिमेशन से फिर मैंने चेंज किया. अभी उसने देखो, उसका हमने डिसाइड किया था क्या कि स्प्लेंडर का, अगर स्प्लेंडर के सेल्स बढ़े तो इम्पैक्ट होगा सेल्स पे इम्पैक्ट, तो हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी. तो वही तुमको यहाँ पे दिखेगा. अभी यहाँ पे इसके इंट्रिंसिक वैल्यू है 2280. अगर मैं बढ़ाता हूँ ये सेल्स फिगर, मैं सिर्फ एक सेल्स फिगर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है. मैं सिर्फ इसका चलो 2,50,000 का सब चेंज हुआ. अभी सब ये लिंक है, सब एक दूसरे को लिंक है. बढ़ गई वैल्यू, बढ़ गई वैल्यू कंपनी की 2473. अभी चलो मैं, अभी ये मेरे को पता था कि मुझे इसकी बढ़ानी है. अगर मैं इसकी बढ़ाऊं, इसकी 5,000 कितना 6,000 कर दूं, कुछ इम्पैक्ट भी होगा इस पे. थोड़ा बहुत हो जाएगा क्योंकि महीने का है, बट हार्डली कुछ इम्पैक्ट होगा. देखो 5-6 रुपए का इम्पैक्ट हुआ. पहले कितना था? 273 था, अभी 85 हो गया. तो ये सब एनालिसिस, अभी ये सब एक दूसरे को लिंक है. पूरा का पूरा बैलेंस शीट जितने भी आप देख रहे हो, सब एक दूसरे को लिंक है. तुम कुछ भी अजम्पशन चेंज करो, पूरा बैलेंस शीट चेंज होगा, बट पूरा एनालिसिस चेंज होगा, बट बैलेंस शीट तुम्हारा टैली होगा. पीएनएल है. अभी यहाँ पे उसने ग्रोथ लिया. अभी चलो इसके बाद तो उसने डायरेक्टली ग्रोथ ली है. अभी कॉस्ट कम होगा तो क्या होगा कंपनी का? वैल्यू बढ़ेगा, कम घटेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा, उससे वैल्यू बढ़ेगा. वैल्यू बढ़ेगा, बराबर. तो मैं प्रॉफिट, अभी ये कॉस्ट है मेरा, मैं कॉस्ट कम करता हूँ, मैं 60% करता हूँ, ठीक है. देखो मैंने सिर्फ एक नंबर चेंज किया है पीएनएल में, पूरे का पूरा बैलेंस शीट हिला, कैश फ्लो हिला, और उसका वैल्यूएशन भी चेंज हो गया. 4,000 हो गया सिर्फ कॉस्ट कम करने से. तो ये सब हम पहले सीखते हैं. पहले तो कौन से कंपनी में बनाना वो सीखते हैं, और फिर उसके बाद ये सब चीजें आते हैं जो इसको लिंकेज होता है. अभी ये तुमको क्या सीखना है कि पहले ये सब कैसे लिंक होते हैं. हर एक एक्सपेंस का शेड्यूल बना है, हर एक लाइन आइटम का शेड्यूल बना है बैलेंस शीट पे. जो जो इंपॉर्टेंट है, हर चीज के नहीं बनाते, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके हम शेड्यूल बनाते हैं. वो हम जब बनाएंगे हमको पता चल जाएगा कि हम कैसे बनाते हैं, कौन से चीजें बैलेंस शीट में देखना इंपॉर्टेंट होता है, और कैसा उसका एनालिसिस होता है. तुमको मैं अगर ऐसे ये मॉडल पे सिखा तो तुमको कुछ नहीं समझेगा. ओके, आई थिंक ओके, ठीक है. मैं guys, those are not comfortable with Hindi, just let me know. I think since everyone is talking in Hindi. So now this is the problem, that if you don't know how to tally the balance sheet, or how to forecast the balance sheet, then there's no use of making this model. So balance sheet should be model should be made and should be linked with each and every item. Now why balance sheet and P&L is important? I will give a simple example. I have also given to Soumitra. Just tell me that if you have Ola company, okay, Ola Electric. So what you are going to exactly, just a sec, I just want to ask you one thing, that this is a model you are going to describe us on the, when you are going to when you are going to take the classes, or exactly this is the model you as a way you predict on this, and this is the way you like do it. Yeah. So going to teach us the way. Yeah. So I will teach you this now, how to make this model. This is what we are here now. This is made by my student. I have not made this model. Since it's a recorded class, I cannot share my personal models, but I will share you personal models in my class.
this is what a student have made. He has done so much of analysis. Just Okay. सर one, इसके लिए एक्सेल की जरूरत पड़ती है क्या सर? ये Excel पे ही होता है. Excel पे ही होता है ये. About the basic Excel, so I have already recorded a few sessions, so you can just like ping in the group. I'll be sharing the entire list with all of you. Okay. So it's So just a about the basic. basic Excel, how should we fixing the cell, how to do like the basic usage of Excel. So we already have made some 4 sessions for that. You can definitely go through those things if you haven't gone through it yet. I'll be sharing the like working sheets and everything with all of you in the group once again. Okay. So you don't have to be worried. If you just join the group, so I'll be sharing everything with all of you. Just tomorrow in the morning, I'll be sharing so that like we can accommodate a handful of more people in the group, and then I'll be sharing it for your convenience. You can go through those things. You can practice those things. You can like simultaneously you can watch the video. You can practice on the Excel sheet. All the formats, entire thing is given there for the Excel classes. You can go through it. Then you can just like you won't feel anything like uncomfortable here in the session. So Excel ka we have like already taken care of it. I already have made the videos for it. Okay. Okay, sir. Thank you. So basic Excel is required. You don't require much Excel skills. When I teach, you can do it with me also. So you can, do it. Okay. Excel, advanced Excel is not required. Basic, just addition, multiplication, and just linkages. So yeah. So the main, the main crux of this lecture was, this session was to know how the model is made. What is the crux? When since I am from the industry, I am not someone who is a college student who is teaching you. So when I make a model, when I teach my students, it is like you need to know that why an asset and liabilities tally and how is a balance sheet, P&L and cash flows is linked. I will not give you the full balance sheet. Yes, this all things you will only be able to do it once you know how to solve, how to make a balance sheet. We will start from making a balance sheet from scratch. Let's say it's your company. How will you make balance sheet for your company and make it tally? How a asset and a liabilities tally? We start making on it and then eventually move on to a listed company. So that happens, your base becomes clear. Now it is not necessary that you have to be from a commerce background or you have to be from a MBA or a finance background, accounts background. This is nothing. It is proper common sense when you do a business. How to make a balance sheet when you start your business. That's it. Then all linkages I will discuss with you. One addition at that particular time, I just would like to make, like anyone who is from the engineering background or from any non-commerce background, so then don't have to be worried about it. So like Rishabh sir, whatever was explaining about these are like product-wise bifurcation of the sales. So regarding that, I did have made like I already have made videos for like how you can analyze the revenues and all these things. It was a part of the Equity Research Training Come Internship. So there I did open 5 to 6 companies profit and loss statement on consolidated basis. I did take you guys through the notes to accounts, like what by what coverage has been made. Okay, like on TCS on industries like that, we did make the coverage. So those who are not from commerce background or would just like to revise the entire thing once again, I'll be sharing those things also in the group so that you are ready for the session with Rishabh sir. Okay. And yeah, that's the thing. Like if you do not have any idea about it or you have not finished your Equity Research Training Come Internship program with us, in that case, you can access those things. I'll be sharing those things also in the group. Okay. So those who are not from commerce background, do not worry at all. Okay. Both of us, Rishabh sir, with so much of experience and expertise, he is always with you. I'm also with you always. Okay. You don't have to be worried. Sir, you can please continue. Okay. So I think Ritika has posted in the chat box that why don't we consider total sale instead of products while analyzing. So Ritika, it is the total sales only that we have considered. If you see, these numbers are coming from forecasting. This is coming from all these numbers only. This is the sales numbers. No, sir. As you said that we won't analyze now that the company is not performing well, so we won't analyze further. So can't we just take the whole number in this first sales forecasting thing? Whole number as in? Total number.
Total sales. Total sales. So when you take total sales and let us say I tell that Hero is launching one more new vehicle. So what is the growth that you will take? How will you take the growth? Will you take 5%, 2%, 1%? Can do that? No. So that is why sales forecasting is done that deep, because see, whenever you talk about manufacturing products, it is what number of units sold, right? Yeah. Into the price, right? This is how sales are. So you cannot just take direct total sales and increase. There can be price hikes also, there can be unit growth also. There are two things which comes in every industry: unit growth and the price hikes. Any industry you talk, manufacturing industry, it works same thing only. Now, as of just wrapping up the session, saying that why this balance sheet and P&L is most important. Now, why and it should tally. Now there are things that even analysts do consider do miss it. See, if I tell you that Ola Electric, okay, say Ola Electric has a manufacturing capacity to produce 1,000 vehicles. Okay, Ola Electric have a manufacturing capacity to produce 1,000 vehicles. So now 1,000 vehicles, can they produce more than 1,000 vehicles? Guys, can they produce more than 1,000 vehicles? No, sir. But so max they can produce 1,000, and let's say Ola bikes are at 1 lakh rupees each. Okay. So can I say this is the maximum sales that they can achieve in a year? It's approximately. Yes, sir. Now what if they have to increase their sales? What they have to do? Additional Production capacity. Yeah, production capacity. Can you just increase the sales randomly? And you say na total sales, 10% growth on this. So next year it will do this, next year it will do this, without impacting the balance sheet. Is it possible? Practically, is it possible? Excel is possible. Practically, is it possible? Practically, it's not possible. No, sir. So what do you have to do? You have to do capex, right? Right. Let us say you don't have money to do the capex. A capex, it is not you can do randomly anywhere. No? You have to have money for that. Let's say you have to do 1 crore of capex for that. You don't have money for a capex. What you will do now? What you will do? Take a loan. Take a loan. That Take a loan. Equity sharing. Equity share you won't raise. I will let you know why equity share not in our lectures, why we cannot issue equity every time. Let us assume we take a loan. Okay, we take a loan of 1 crore. Now this loan will have an interest. Even if it's now in India, it is 15%, Now just to increase, now this will lead to 1,50,000 of your cost, interest cost. Now just to increase your sales by 10%, you know how much things is to be done? You just cannot increase it directly. Capex is not reflected on P&L. It is reflected on the balance sheet. After Capex, there will be depreciation, which will be reflected on the P&L. When you take loans are not reflected on P&L, it is reflected in balance sheet again. Interest expense is reflected in the P&L statement, and both this impact your cash flows as well. So just one change has so much of impact. This is what you learn while doing this financial model. These are the things you will learn, how a change in sales can impact all those things. All has been linked. All will link to each other. Just a change in sales will impact your assumptions and your valuation. Like I have showed you, I just change the sales numbers, it will impact my cash valuation. Can't we hope for cost cutting? Yeah, cost cutting also you can do. But practically, cost cutting, this is what we have taught in school. Have a price of the milk that you purchase have declined in any of the years? You are drinking milk from No, sir. no, sir. So inflation cost never decreases. You can only manage the cost, that to hardly few basis point. You cannot decrease the cost randomly. In model, cost decrease is a rare thing. In an industry, decreasing cost is very, very rare thing. And if that happens, it is said to be one of the best thing.
company said to be one of the best company if they can reduce the cost. You will never see a cost declining. So now this valuation method, Ganesh, depends on which sector you are looking at. Every sector has different valuation metrics. Every company is valued on different valuation methodology. It is not one method which is used for every company. So Gaurav, for forecasting, you have to know about the industry cycle. What are the products? Who are the competitors? What is the market share, etc., etc. All those things. That's a big sales forecasting is a big topic. But as of now, see now, why I took Hero as an example, because everyone knows the bike. Everyone knows, even if I take Maruti, everyone knows about the car. So you can predict it. Now Maruti, okay. Maruti good company or bad company? Anyone? Good company. Why good company? Because sir, basically उनका टारगेट एक तो इंडिया की पॉपुलेशन ही है, लाइक जो उनकी माइलेज देती है कंपनी कार, माइलेज हो गया, फीचर्स हो गए, सेफ्टी कम है उसमें, बट इंडिया की पब्लिक जो सेफ्टी नहीं प्रो देखती इतनी. बेसिकली उनको माइलेज देखना होता है एंड फीचर्स देखने होते हैं. दैट्स व्हाई इंडिया में मार्केट शेयर ज्यादा है. और आफ्टर सेल्स सर्विस उनकी ज्यादा अच्छी है. कॉस्ट इफेक्टिव है सर मारुति की गाड़ियां. तो मैं तुमको अगर दूं, तुम्हारे पास अगर है 10 लाख रुपए, डाल दोगे मारुति में? तो तुमको स्टॉक मार्केट में कुछ पता नहीं, डालोगे मारुति में? नहीं, नो सर. व्हाई? अभी तो बोला तुमने अच्छा है कंपनी. एक्चुअली सर देयर इज अ डिफरेंट ऑप्शंस, और ऑप्शंस भी ना, लाइक डिफरेंट सेक्टर्स हो गए. नहीं चलो, मैं तुमको बोला किसी ऑटो में ही इन्वेस्ट करना है. किसमें इन्वेस्ट करना? हाँ, महिंद्रा में सर, महिंद्रा और टाटा मोटर्स ये बेटर रहेगा, क्योंकि ये ईवी पे ज्यादा फोकस कर रही है. ठीक है. ईवी मुंबई जैसे सिटी में लाइट की प्रॉब्लम है, तुम ईवी की किधर लेके बैठते हो? लाइट ही नहीं है. मुंबई में एक हाईवे है, एक रोड है, यू नो, घोड़बंदर रोड है, वहां पे लाइट्स नहीं है रास्ते पे. चार्जिंग स्टेशन कहां से मिलेगा? ईवी तो है, ईवी नेक्स्ट 10-20 इयर्स की बात है. अभी तो कुछ है नहीं ईवीज में. टाटा मोटर्स भी प्रॉफिट नहीं कर रहा है ईवीज में. तो ये सब तुम ऐसा देख के नहीं होता, वो सब एनालिसिस करके होता है. अभी ऑटो में मेरे को पूछो तो ना मारुति चल रही है ना टाटा चल रही है. महिंद्रा की गाड़ी काफी अच्छे चल रहे हैं यार. एक्सपेक्टेड टू ग्रो मोर. अभी हमने रिसेंटली, इफ यू हैव रीड न्यूज, महिंद्रा स्कॉर्पियो की 1 लाख बुकिंग्स आ गए. 1 लाख बुकिंग्स फॉर अ कार फॉर ऑलमोस्ट 15 lakhs. कितना हो गया रेवेन्यू? 1 lakh bookings for a car of approx range is 15 lakhs. 15 लाख से चालू होते है वो गाड़ी, जाती है 30 lakhs तक. कितना हो गया? 15,000 करोड़. सर बुकिंग अमाउंट तो पर कम रहती है, मतलब लाख में तो नहीं रहती है. ठीक है, तुम उस पे चलो 10-15 निकाल दो कि 10-15% लोगों ने नहीं लिया गाड़ी, फिर भी कितना हुआ? 1 लाख बुकिंग, इतना बड़ा नंबर. कितना हो गया ये? 10 करोड़, 100 करोड़, कितना हो गया? 100 करोड़ के भी ऊपर हो गया. बहुत ज्यादा हो गया सर, बहुत ज्यादा हो गया. मैं तो सिर्फ ये बुकिंग, ये सिर्फ नंबर पे ही 15,000 करोड़. मैं तो सिर्फ एक नंबर पे ही स्टॉक ले लूं, भले महिंद्रा कुछ करता है नहीं करता हो. अगर ये थोड़ा सा भी इसमें सच्चाई रहा तो ये स्टॉक किधर का किधर हो जाएगा. करो इस पे 10 तक का प्रॉफिट. ऑटो इंडस्ट्री में 10 तक का प्रॉफिट होता है अप्रॉक्स. तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया? तुम्हारा प्रॉफिट 1500 करोड़. 1500 करोड़ का प्रॉफिट हो गया. सर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मतलब था क्या, जैसे बुकिंग अमाउंट जो होता है ना वो 3 महीने का मतलब ये रहता है. तो 3 महीने में कंपनी ना बहुत ज्यादा बुकिंग अमाउंट से इंटरेस्ट भी मतलब निकाल ले रही है प्रॉफिट के तौर पे. बराबर. हाँ तो वो भी, चलो मैं इसका आधा भी ले लूं, 50,000 भी ले लूं बुकिंग्स, 50,000 फिर भी कितना होता है? आधे, चलो मैं बोलता आधे लोगों ने बुकिंग करके छोड़ दिया, नहीं लेना गाड़ी. 50% लोगों ने भी कर दिया ऐसा. तो अभी ये सब चीजें हमको नहीं, हमको मारुति अच्छी लगती है. क्यों? तो क्योंकि वो गाड़ी अच्छी बेचते है. मारुति की कंपैरिजन में एक भी गाड़ी नहीं है. मारुति डोंट हैव एनीवन हु इज कंपीटिंग फॉर क्रेटा एंड सेल्टॉस. No, they are not. Maruti doesn't have car who is come. Now they are coming up into Grand Vitara and all. Maruti hasn't performed from last 5 years. 2017 Maruti stocks was 10,000 rupees. Today the price is
8,900 something. It has not even crossed this previous high, whereas Nifty Indian market is at lifetime high. 50% बढ़ गया उसके लो से. मारुति उसके हाई से भी नहीं बढ़ा है. लो तो छोड़ दो, मारुति तो उसके हाई भी नहीं गया. निफ्टी इज ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई. ठीक है, तो ये सब चीजें हम एनालिसिस करेंगे जब हम इंटरैक्ट करेंगे, पब्लिक ओपिनियन लेंगे. तुमको क्या लगता है स्टॉक के बारे में, क्यों हम मॉडल बना रहे हो, क्या रीजन है, क्यों इसका वैल्यूएशन होना चाहिए. ये सब जाके जब तुम इंटरव्यू में बात करते हो तब तुम्हारा, या खुद भी इन्वेस्ट करते हो. अभी ये देख के मैं स्टॉक नहीं लेने वाला हूँ. मैं भी खुद एनालिसिस करूँ, ये देख के मेरे को नहीं लगता है कि ये प्राइस आने वाला है. ये सिर्फ मेरे एनालिसिस के लिए है कि अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है मॉडल में तो करके कितना वैल्यू आता है मेरे हिसाब से. फिर मैं हर क्वार्टर उसको एनालिसिस भी करूंगा कंपनी को कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है. फाइन. सो ये सब हम लर्न करेंगे. नेक्स्ट वीक से हम क्लासेस चालू कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग द क्लासेस फ्रॉम नेक्स्ट वीक, दैट इज अराउंड 17th August. So we'll learn all these things. First, we'll know how to make this and then analyze on those companies, how to do the model and how it is to be made, and how to analyze company from a interview perspective as well and from a own personal perspective as well. Interviews technical round में क्या पूछे जाते हैं and model किस हिसाब से बनाया जाता है and खुद इसका कैसा यूज कर सकते हो तुम तुम्हारे इन्वेस्टिंग के लिए. Fine. यस सर. Okay. Thank you guys. क्वेश्चन था. Yeah. सर वो आप ऑटोमोबाइल का डेटा कहाँ से देते हो बताओगे? आपको हम बताएंगे तुमको. तुम क्लासेस अटेंड करोगे तो हम उनको बताएंगे कहाँ से लेते हैं. हम लोग कौन से सेक्टर पे करने वाले हैं? अभी फिलहाल तो मॉडलिंग है. तुमको ये आना चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने. फिर हम ऑटो पे ही करेंगे, ऑटो सेक्टर ही पकड़ेंगे क्योंकि ऑटो सेक्टर सबसे इजी होता है. सबको पता होता है कि गाड़ी कौन सी बेच रही है और कौन सी नहीं बेच रही है. ठीक है. ठीक है. राइट. So I think other Shashank, duration and all, Soumitra will let you guys know what is the duration, how it be. You can contact Soumitra. I will be answering all these questions, so everyone can stay back, and for the details of the class and all these things, so they can just like talk to me right now. Okay, so one by one you can ask your questions. You can just unmute yourself and you can ask your questions one by one regarding the batch timings and all those things. You can just ask me. So if you have any doubt, you can ask me the questions. You can just unmute yourself and you can ask. See, they are going to tell us what are the different types of models they are going to teach, or exactly on what sort of research basis that sort of. Rishabh sir. Yeah, Soumitra. Yeah. आप प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे. So models will be taught, a basic model, a manufacturing company model. How does a manufacturing company work? We are not going into IT, we are not going into banking because it requires other expertise as well. So how to make a basic model, basic understanding of your balance sheet, P&L and cash flows. After that, there's an advanced classes where if you want to go specific industry, then we will cover it there. As of now, we will only teach about modeling, basic modeling, basic manufacturing company, any manufacturing company. Yeah. So what just Rishabh sir said, so about that, like after analyzing this particular industry, which is the automobile industry, automobile sector, so there slowly after you gain expertise over this particular sector, then as you guys already probably have gathered some experience about steel companies, cement stocks, so like that you can definitely cover those things, because in India we have definitely a dominant service sector, but manufacturing sector is also not lagging behind and it is doing really well. So any manufacturing companies, you will be able to analyze, you will be able to make the forecast and all these things. So regarding that, all the necessary informations and guidance will be given to all of you. Details about the course, batch timing and recorded sessions available for working professionals. Yes, Gaurav. So about the batch timing, so I just need to discuss with Rishabh sir, like regarding the batch timing, because you know, as you already got to know that he is also working.
So about the batch timing, probably we will have our batch on Wednesday in the evening time, 7 to 9 p.m. Or we can have like our batches scheduled on Sunday also. So we are just looking at that, and we will let you know about the perfect timing of the batch. And about the rest of the questions about the recordings, yes, we will provide you with the recordings. And the batch timing, as I said, if it is on Sunday, so probably it will be in the morning shift. And if it is in the Wednesday, so then the evening shift, 7 to 9, it can be. So we are not 100% like sure with the classes timing yet. So I just need to discuss with sir, and then we will schedule provide you with the perfect timing. So it will just take like by tomorrow, I'll be able to tell you about the classes timings. Samitra, 7 to 9 will be fine for weekdays. Okay, 7 to 9, he is confirming. Search WhatsApp group. Yeah, so the Wednesday 7 to 9, will that be fine, sir? Yes, 7 to 9 weekdays is totally fine. Okay, so 7 to 9 on Wednesday, you can have your live session, and you will also be getting the recorded sessions as well. But we would recommend you to join the live session because like you can have a healthy discussion with our sir. Okay, and one more thing, like this was just an introductory session. It is not the entire thing. It is not even like 5% of like what he understands, what he knows. Okay, so I did have a long time talk with him, so I do understand what he will get to learn. So initially, I did tell like all of you guys that I'm going to be the trainer, mentor for the financial modeling classes. But I did look at myself. I did look at my entire work experience and all these things, but I just couldn't match the standard he is going to offer. I know where I can get close to him at this point of time. So that is why I was fortunate enough to contact to him. He will be training you. Okay. And about the training cost and all these things, so like if you are an existing student of Equivaluesearch, so it would be 1100. And if you are not already an existing student of our batch for Equity Research, then it will be 2000. So like all of those candidates who are already learning from us, the Equity Research Training Come Internship, for them it is 1100. And those who are joining us completely fresh, would were not a part of our family, they can join for 2000.